Hi everyone, very good morning. Sharma from Olive Board, and I'm here with the live mint analysis that we do every Monday, Wednesday, and Friday. I hope my audio and video is clear to all of you. Just let me know in the comment section. Then we're going to start off with the class. ठीक है, तो ये लाइव मिनट एनालिसिस वी डू एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे एट 8 AM. जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, वी ट्राई टू डिस्कस इट इन डिटेल एंड वी ऑल्सो ट्राई एंड डू अ फ्यू MCQs ताकि हम देख सकें कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड वेदर यू अंडरस्टूड the news or not. या फिर कई बार I give you MCQs before discussing the news so that I know that you're reading the newspaper and you can also evaluate yourself whether you've read the newspaper or not. Good morning, Maharishi. Okay, all clear? Fine. So then let us begin with our session today. And before I start, if you want to download this YouTube class PDF, you can do it from the Olive Board app. Just go to the courses section. There's going to be a separate folder of YouTube class PDFs. In this courses section, you can download the PDF from here. All right. Sure. Now let us start with our session. Now first important question that I'm going to give you over here. Then we're going to go with the newspaper or the newspaper cutting or the news which is important. Let me see whether you have read the newspaper or not. Let me see who's going to answer this question. Which global rating agency upgraded India's sovereign credit rating after 18 years in 2025? Moody's Investor Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Care Ratings. What is the answer to this question? Let me see who has out of you read the newspaper. वहां पे ये article था directly that this credit rating agency has upgraded India's sovereign credit rating after 18 years in 2025. Anyone who'd like to answer? Maharshi? Anyone? So you have to name the credit rating agency which has provided India a sovereign credit rating and has upgraded it after 18 years in 2025. Nobody knows the answer. So basically it is S&P Global. ठीक है, तो यहाँ पे you can see here, this is the article. After 18 years, India scores S&P upgrade amid tariff gloom. S&P upgrades India's sovereign rating after 18 years. S&P Global upgrades ratings of 10 lenders also from India. ठीक है, तो ये है न्यूज. इसमें क्या कहा है कि इंडिया has received its first sovereign credit rating upgrade from S&P Global Ratings in 18 years. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म रेटिंग हमारी BBB- में रही है और इससे अपग्रेड हो गया है हम एंड वी आर इनटू BBB. तो अभी हमारी जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो BBB है. ये आपने याद रखना है. यहीं से आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क that you are going to read about these credit rating dynamics. जैसे A क्या है, AAA क्या है, AAA+ क्या है, BBB क्या है, BBB+ क्या है, BBB- क्या है. ठीक है, ये आपने टाइप्स देखनी है कि किस तरह से क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड होती है. दिस इज अ होमवर्क दैट आई एम गिविंग यू. ठीक है, ये आपने चेक करना है. तो अभी इंडिया की अपग्रेड कर दी है फ्रॉम BBB- टू BBB. ये आपने याद रखना है. डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस in your examination. This reflects India's economic resilience, fiscal consolidation, structural reforms, and favorable policy measures. ठीक है, ये अपग्रेड तब आया है when India faces tariff challenges from the US, but the development strengthens India's global credibility and investor confidence. ठीक है, तो ये एक ऐसे टाइम पे आया जहां पे हमें ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी. इस टाइप का जो चीज आई है amid the tariff challenges is a very positive outlook for India. ठीक है, तो इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग है इट इज अपग्रेडेड बाय S&P ग्लोबल रेटिंग्स आफ्टर 18 इयर्स. BBB लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड से BBB हम BBB पर आ गए हैं. इकोनॉमिक रेजिलियंस, फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर्स, रिफॉर्म्स इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बैंक्रप्सी कोड, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब चीजें हैं, रीजंस हैं व्हाई आवर क्रेडिट रेटिंग हैज इंप्रूव्ड. ठीक है, तो हमारा एम क्या है, हमें विकसित भारत बनना है बाय द ईयर 2047. ठीक है,
ये अपग्रेड इंप्रूव करता है हमारा एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल, लोअर्स बोरोइंग कॉस्ट्स एंड एनहांसेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. ठीक है. And India continues strong post-COVID recovery with robust growth despite the global challenges that we are seeing as of now. Whether it's the geopolitical challenge, whether it's the tariff challenge, whether it's any kind of challenge right now, we are as of now showing a positive outlook. We are showing economic resilience. ठीक है. अच्छा, इंडिया की सॉवरेन अपग्रेड के साथ साथ एसएनपी has also graded and upgraded the ratings of 10 Indian lenders like SBI, ICICI, HDFC, Axis, Kotak, Bajaj Finance. ठीक है. तो कैन एनीवन टेल मी, एक यहां से मुझे क्वेश्चन याद आया दैट SBI, ICICI एंड HDFC, इन तीनों को हम मतलब एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालते हैं ऑफ द बैंक्स. Can anyone tell me what is that category of banks called? जिसको हम बोलते हैं too big to fail. Too big to fail. Can anyone write it in the comment section and tell me हम इनको बोलते हैं, इन banks को बोलते हैं that they are too big to fail. तो ऐसे banks को what is the term that is used for such banks? Can anyone tell me in the comment section? If you know, tell me in the comment section. नहीं तो I'm going to obviously tell you कि इन्हें क्या बोलते हैं. SBI, ICICI and HDFC Bank. Anyone would like to answer? ये अपग्रेड हेल्प करता है इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को with profitability, asset quality and capitalization. But there are obviously concerns over US tariffs on Indian goods which might offset these gains obviously. ठीक है. तो इसकी यहाँ पे बात की गई है. तो कौन सी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है which upgraded India's sovereign credit rating? It is S&P Global Ratings. And ये SBI, HDFC Bank and ICICI Bank are known as systemically important banks. तो इनको क्या बोलते हैं हम? Systemically important banks which are too big to fail. These are too big to fail. और अगर ये fail होते हैं तो they are going to impact the entire financial system. ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया को डिसरप्ट कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाई इनके ऊपर स्क्रूटनी भी ज्यादा होती है, रेगुलेशन भी ज्यादा होती है. बहुत ध्यान से हम इन बैंक्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि दे शुड नॉट फेल एट ऑल. ठीक है जी. आई होप दिस इज क्लियर. Next important news over here is that India's July trade deficit hits 8-month high at $27.35 billion. तो यहाँ पे हमें ट्रेड डेफिसिट का पहले तो मीनिंग समझ आना चाहिए है that what is the meaning of trade deficit. So it is basically exports minus imports. When your मतलब जब हम ट्रेड डेफिसिट को जब हम इस तरह से देखते हैं, लेकिन इसमें इंपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा रहती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट. व्हेन योर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट्स, तो आपकी ये जो वैल्यू है ये जब माइनस में जाती है, व्हेन योर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट. ठीक है. तो जुलाई, इंडिया का जुलाई का जो ट्रेड डेफिसिट है, इट हिट्स 8-month high at $27.35 billion. ये मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है. मर्चेंडाइज की बात कर रहे हैं तो वी टॉकिंग अबाउट ओनली गुड्स. ठीक है. सो रीजन क्या है? सर्ज इन इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी, while exports slowed ahead of US tariffs implementation. ठीक है. तो ये प्रोविजनल कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा है which shows imports outpaced exports, raising concerns over external balances. तो हमारे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से. ट्रेड डेफिसिट जुलाई में $27.35 बिलियन, पहले कितना था? $23.82 बिलियन इन नवंबर 2024. एक्सपोर्ट्स 37.24 बिलियन, down from 37.95 billion in June. Import 68.27 million. So you can see this difference. ठीक है. हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? व्हाट आर द की इंपोर्ट आइटम्स इन आवर कंट्री? पेट्रोलियम एंड क्रूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी. मेजर ट्रेड पार्टनर्स क्या क्या है हमारे? फ्रॉम चाइना, यूएई, रशिया, यूएस, सऊदी अरेबिया. और एक्सपोर्ट्स हमारे कहाँ जा रहे हैं? यूएस, यूएई, नेदरलैंड्स, चाइना, यूके एंड सिंगापुर. तो आपने ये याद रखने हैं कि इंपोर्ट्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं सबसे ज्यादा? चाइना, यूएई,
रशिया, यूएस एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। एंड हमारे एक्सपोर्ट्स कहाँ पे सबसे ज्यादा जा रहे हैं? यूएस, यूएई, नेदरलैंड्स, चाइना, यूके एंड सिंगापुर, ठीक है। ये आपने टॉप याद रखने हैं, ये टॉप 6 या टॉप 5 आप याद रख लीजिए, ठीक है। इंपोर्ट्स हम कहाँ से ला रहे हैं? चाइना, यूएई, रशिया, यूएस, सऊदी अरेबिया। एक्सपोर्ट्स यूएस, यूएई, नेदरलैंड्स, चाइना, यूके एंड सिंगापुर, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें, 127.46 बिलियन डॉलर्स अप्रैल टू जुलाई में है ये। This is up from 118.34 billion last year. नॉन पेट्रोलियम इंपोर्ट्स जो है 179.18 बिलियन डॉलर्स है, अप फ्रॉम 165.57 बिलियन लास्ट ईयर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आर इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग more than our exports, which is leading to a trade deficit, ठीक है। तो रीजंस हो गए जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रम्प के जो 25% टैरिफ अनाउंसमेंट है, प्लस 25% यानी कि टोटल ऑफ 50% टैरिफ्स, ठीक है। So India's merchandise trade deficit in July 2025 widened to an 8-month high of how much? $23.82 billion, $27.35 billion, $37.24 billion, $68.27 billion. Let me see who's going to answer. Write out in the comment section and give me the answer for this question. Yes, absolutely correct. शिल्पी absolutely correct. 27.35 यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, right? ठीक है, चलिए। अच्छा, this is again a surprise question for you. This was also in news. Let me see whether anyone of you has read the newspaper or not. Now the question is, which scheme is being taken global by India as a model for rural land mapping and governance? Let me see who's going to answer this question. Swamitwa, uh, पीएम किसान डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और पीएम आवास योजना। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको हम ग्लोबल ले जाना चाह रहे हैं, हम उसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं? व्हाट इज दैट स्कीम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? एब्सोल्युटली करेक्ट शिल्पी, इट इज द स्वामित्वा स्कीम। So India is set to internationalize its digital rural land mapping model, which is our Swamitwa scheme, to promote global collaboration and land governance. तो ये जो स्वामित्व स्कीम है, ये आपके यूजिंग ड्रोन्स बेस्ड सर्वेज, दिस स्कीम इश्यूज प्रॉपर्टी कार्ड्स टू रूरल लैंड ओनर्स, ठीक है। सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम व्हाट डू दे डू इज दे आर गोइंग टू डू सर्वेज थ्रू ड्रोन्स, ठीक है। दिस आल्सो कॉल्ड चूना मार्किंग, ठीक है। तो ड्रोन से हम सर्वे करते हैं एंड देन प्रॉपर्टी कार्ड्स आर इशू टू द रूरल पीपल, ताकि उनके पास ओनरशिप राइट्स आ जाए, सो दैट दे हैव ओनरशिप राइट्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। उनके पास ओनरशिप क्लैरिटी रहे, लीगल राइट्स उनके पास हो, एक्सेस टू क्रेडिट हो, डिस्प्यूट्स रिड्यूस हो जाए। दैट इज व्हाई वी हैव दिस स्वामित्व स्कीम, ठीक है। This initiative has gained recognition at global forums like the World Bank Land Conference 2025 in Washington, D.C. and the International Workshop on Land Governance in Gurugram. ठीक है, तो ये स्वामित्व स्कीम क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। जिसमें ड्रोन्स का यूज करके हम क्या करते हैं? मैप करते हैं रूरल लैंड्स, किसका कितना एरिया है। Villagers को then we issue property cards, ensuring ownership rights and reducing land disputes. ठीक है, this empowers rural citizens by enabling access to credit through verified land ownership. Panchayati Raj Ministry is the nodal ministry for implementation. I am Ahmedabad tasked to study the model for its global applicability. Chetan, very good morning to you. अभी तक अगर हम प्रोग्रेस देखें तो ड्रोन सर्विस हैव कंप्लीटेड इन 318,000 विलेजेस, टारगेट है 346,000. 24.4 million property cards have been distributed across 160,000 villages and over 100 million property parcels have been mapped. International recognition इस स्वामित्व स्कीम को मिली है. It was praised at World Bank Land Conference 2025 and it was highlighted at Land Governance Workshop in Gurugram in March 2025.
ठीक है. The aim is to promote knowledge exchange. तो जो अगर हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मेजर एम क्या है? To promote knowledge exchange and adoption of best practices in land governance globally, similar to how India promoted UPI. ठीक है, तो कौन सी स्कीम है which has been taken global by India as a model for rural land mapping and governance? It is the Swamitwa scheme. ठीक है, तो यहीं से आपका एक होमवर्क बन जाता है that you have to read about this scheme in detail. ठीक है, read about the scheme in detail. Okay, चलो अब एक और सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए. दिस वाज आल्सो इन न्यूज. What is the new base year for updating India's WPI, PPI and IIP? WPI, PPI और IIP को अपडेट करने के लिए आपका न्यू बेस ईयर क्या रहेगा? 2010-11, 2011-12, 2015-16 और 2022-23. What is the answer? Anyone would like to answer? Chetan has given me the answer. Anybody else? Absolutely correct. It is 22-23. ठीक है, so the government plans to update WPI, introduce a PPI for the first time, and revise IIP to the 2022-23 base year. Yes, Shilpi, it is not 2015-16, not C, it is 2022-23. ठीक है शिल्पी. तो यहाँ पे एक्चुअली न्यूज क्या थी? गवर्नमेंट टू अपडेट की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. The government of India has launched a nationwide survey to update the economic indicators like the wholesale price index, introduce a producer price index for the first time, revise the IIP with the new 22-23 as the base year. And aim क्या है? To make inflation and industrial output measures more reflective of today's dynamic manufacturing sector. क्योंकि inflation हो रही है, इन्फ्लेशन शुड कम इनटू अकाउंट. तो हमें बेसिकली विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हमें बेस ईयर पे उसी तरह से लेना चाहिए. ठीक है, तो इसे नेशन वाइड सर्वे कर रहे हैं. बेस ईयर 2023 पे अपडेट हो जाएगा, which is going to replace the old 2011-12 base year. ठीक है, this survey is conducted by NSO's Field Operations Division with 26 statistics officers. ठीक है, डेटा सोर्सेज क्या है इसके लिए? जीएसटी इनवॉइसेस, ई-वे बिल्स, बैलेंस शीट्स, कोल्ड स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर, गैस, वाटर सप्लाई एक्टिविटीज. यहाँ से हम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे. जो ओनर्स मैनेजर्स ऑफ फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर डेटा. ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सबमिशन होगी, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होगी फॉर रिलायबिलिटी. ठीक है, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल भी रहेगा. ठीक है, और हमें बेसिकली इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड से मैच करना है. ओके, देयर आर सम industrialists who are saying that like Arun Kumar Garolia, who is chairman of Engineering Export Promotion Council, he says that the move is good. It will make economic indicators more accurate and updated. ठीक है, तो आपका जो WPI का जो बेस ईयर है वो 22-23, WPI, PPI, IIP ये सब चीजें जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बेस ईयर विल बी 22-23. ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज है आपकी MSME से रिलेटेड, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, which seek rapid launch of export intelligence platform. ठीक है, अच्छा पहले तो for those of you who are here, who are watching the video, I have a question for you. MSMEs की जो definition है, this has been recently updated, है ना, कि हाँ MSMEs का जो criteria है वो update हुआ है. ठीक है, so let me know that what is this updated definition of the MSMEs. Write it down in the comment section and tell me that what is the investment limit and the turnover limit for micro, small, medium enterprise. What is the investment and the turnover limit? Write it down in the comment section and let me know. Let me see who's going to give me the correct answer. Until you're writing it in the comment section, let's discuss this news. The article is that MSMEs, they seek rapid launch of export intelligence plan. ठीक है, so they have urged the government to expedite the launch of this Global Market Intelligence Service, GMIS, Global Market Intelligence System, which is a one-stop export intelligence portal
which is planned under the MSME Ministry's International Cooperation Scheme. तो ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है इसके अंदर प्लान किया गया है अ वन स्टॉप एक्सपोर्ट इंटेलिजेंस पोर्टल. ठीक है. The platform is intended to help 66 million MSMEs identify potential for foreign markets, understand demand trends, manage logistics and regulatory hurdles. ये इसके पीछे का reason है. Demand comes at a time when $30 billion worth of MSME exports and 70 to 80,000 jobs are threatened by the recent tariff hike. ठीक है. तो ये GMIS जो पोर्टल है, this is proposed in 2021-22 under the International Cooperation Scheme, but it is not yet functional. इसका पर्पस क्या है? To help the MSMEs navigate export markets, pricing benchmarks, demand forecasts, logistics, shipping costs, regulatory requirements. लेकिन इंडस्ट्रीज की तरफ से कंसर्न है the MSMEs face difficulties pivoting to new markets after US tariff hikes, threatening jobs and 30 billion worth of exports. And if we see that MSMEs contribute for about 45% of India's total exports, and इसीलिए MSMEs are urging the government to fast track this scheme. ठीक है. तो जो SME forum है, it urged cabinet secretary TV Somanathan to expedite this GMIS. ये international cooperation scheme क्या है? It provides financial support to the MSME association to promote exports. In financial year 25-51, MSMEs were supported with 18.92 crore. अगर हम करंट गैप की बात करें तो अराउंड 173,000 MSME exporters lack the access to this market data, intelligence, regulatory insights. ठीक है. So which proposed platform is aimed at helping Indian MSMEs tap global export opportunities by providing market intelligence and demand forecasts? Udyam Portal, Champion Desk, Global Market Intelligence Service, or MSME Sambandh? What is the answer? Yes, Chetan, absolutely correct. तो जो आपके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनमें if I talk about the investment limit and the turnover limit, it is 2.5, 25 and 125 crore, right? And it is 10, 10, 100 and 500 crores. This is in crores. ये है आपकी लिमिट, इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड टर्नओवर लिमिट. तो आपने ऐसे याद करना है 2.5, 25, 125, 10, 100 एंड 500. ये आपकी लिमिट रहेगी. मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 2.5 करोड़, टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़. सिमिलरली स्मॉल के लिए 25, 100, मीडियम के लिए 125, 500. ठीक है. वेरी गुड चेतन. ठीक है. यस, GMIS इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सर्विस. ठीक है. चलो. Again, a surprise question for all of you. Let me see whether you've read the newspaper or not. So, according to Donald Trump's recent statement, tariffs on which product could reach up to 300%? Crude oil, steel, semiconductors, or automobiles? What is the answer? किस पे कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की 300% से भी ज्यादा हो सकते हैं टैरिफ्स? Let me see who's going to answer this question. Let's see whether you've read the newspaper or not. Yes, Chetan, absolutely correct. It is the semiconductor. C is the correct answer. Semiconductors पे कह रहे हैं कि tariffs on semiconductors soon could reach 300%. हाँ, because exactly, yes, very good Chetan, exactly. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है President Donald Trump said he would set levies on semiconductors in the coming 2 weeks. I'll be setting tariffs next week and the week after on steel and on, I would say, chips and semiconductors. ठीक है. It might be, it could reach 300%. Okay. Sure. Now, IT firms tap GCC consulting route to win tech contracts. ठीक है. तो ये GCC जो कंसल्टिंग रूट है वो IT फर्म्स इस रूट को अपना रहे हैं
GCC's global capability centers. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो न्यूज क्या है कि जो आईटी फर्म्स है दे आर एक्सेसिंग दिस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का रूट टू विन टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है टू विन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स we have these global these IT firms, they are taking it through the global capability centers. ठीक है. So, mid-sized IT firms like Emphasis and Hexaware Technologies, they are increasingly investing in the Global Capability Center advisory firms to win larger technology and engineering contracts. तो ये किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो GCC एडवाइजरी फर्म्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा मिले. ठीक है. By partnering with advisory firms, these IT players they gain faster access to new clients, improve their positioning in India's expanding GCC market, which is currently valued at $68 billion and it is projected to reach $105 billion by 2030. कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है? एम्फैसिस, हेक्सावेयर, persistent systems, etc. ठीक है. Investments, Emphasis acquired a $4 million stake in AOCA, which is a US-based GCC advisory firm. Hexaware acquired SMC Squared, gaining entry into the GCC advisory business. So India का जो GCC industry है, it is $68 billion today, and it is expected to grow to $105 billion by 2030. Right? And it has a lot of growth potential. By 2030, the number of GCCs in India is expected to rise to 2,200 from current 1,680. ठीक है? So what are the benefits of GCC tie-ups? You get faster access to new clients. You get expertise in tech services, security, maintenance. Yeah, it avoids delay in the build, operate, transfer models. ठीक है. Then Fortune companies expanding GCCs in India due to cost savings, talent pool, scalability. ठीक है. So why are IT firms like Emphasis and Hexaware investing in GCC advisory firms? What is the answer? Firstly, to win larger tech and engineering contracts, to expand into the oil and gas sector, to shift headquarters outside India, to diversify into agriculture-based IT solutions. What is the answer? Quickly give me the answer. Absolutely correct. To win larger tech and engineering contracts. ठीक है. चलो. इंडिया लुक्स ईस्ट, डीपन्स ट्रेड लिंक्स विद सिंगापुर आसियान. तो अब देखो, अब हमारे यूएस तो हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है. यूएस इज पुटिंग अ लॉट ऑफ टैरिफ्स ऑन अस. Now we need to diversify our markets. We need to diversify our markets, and because of that, we're looking towards the east. So India is intensifying its economic engagement across Asia by holding trade talks with Singapore and the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN के साथ. The goal is to expand market access, modernize trade agreements, strengthen cross-border connectivity. ठीक है. तो fourth meeting of the India-Singapore Joint Working Group on Trade and Investment was held. The fourth meeting, India-Singapore के बीच में talks are being held. Discussions included trade facilitation, investment promotion, supply chain resilience, regulatory streamlining. And this marked 60 years of diplomatic relations and 20 years of comprehensive economic cooperation agreement. ठीक है. आसियान इंडिया ट्रेड एंगेजमेंट की भी बात यहाँ पे हो रही है. इंडिया होस्टेड द 10th आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट joint committee meeting from 10th to 14th August. Discussions aimed at updating the 15-year-old contract, and the focus areas were logistics, supply chain improvements, cross-border trade facilitation, and regulatory alignment. Right? And India's goods exports to ASEAN fell 5.45% year on year to $38.96 billion. Imports from ASEAN rose 5.64% to $84.16 billion. And next meeting of this with ASEAN is scheduled for 6th to 7th October 2025. Okay, so recently India deepened trade talks with ASEAN and Singapore to expand market access. What is the name of the trade agreement between India and Singapore? ASEAN India Free Trade Agreement,
India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement, Regional Comprehensive Economic Partnership, Indo-Pacific Economic Framework. What is the answer? What is the answer? What is, the name of the agreement? Shilpi Singh, A. Anyone else? Chaitanya Singh, CECA. Chaitanya Singh, B. So the correct answer is B. It is not A, Shilpi. It is, we're asking about the trade agreement between India and Singapore. So it is B, India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement. That's correct, Chetan. Okay? I hope it's clear, Shilpi. Now, Modi's Independence Day called Swadeshi Security Shield Farm Focus. तो यहाँ पे Independence Day की जो speech थी, on 78th Independence Day, PM Narendra Modi delivered his longest address, 103 minutes, and the focus was Swadeshi, which is self-reliance, stronger national security, and farmer welfare. He outlined a roadmap for boosting domestic manufacturing, protecting the infrastructure, and preparing India for future geopolitical and economic challenges. तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्वदेशी के लिए एक पुश दिया गया, use local products to reduce import dependence, encourage domestic manufacturing. हाँ, yes, AITG is तो with the entire group of ASEAN. Yes, yes, चेतन, ठीक है. GST रिफॉर्म्स की बात की, रिस्ट्रक्चरिंग GST into 2 slabs. ये दिवाली गिफ्ट दिया सिटीजंस को, which is going to which is going to boost consumption. So made in India semiconductor की बात की कि by the end of this year India will roll out its first indigenous chip by the end of this year 2025. Sudarshan Chakra mission की बात की, to protect public places and critical infrastructure from emerging technology threats. Nuclear energy capacity expansion की बात करी, tenfold growth by 2047 तक हमें जाना है. By 2047 there should be a tenfold growth in this nuclear energy capacity expansion. ठीक है, with up to 10 new nuclear reactors. Made in India jet engines की बात की, Indian scientists and engineers to develop indigenous jet engines. ठीक है, the shift to Swadeshi in agriculture and dairy products. Increase investment in rural infrastructure. Farmers' welfare declared a top national priority. New security shield strategy to counter emerging tech threats. Expansion of digital infrastructure. Inspired by Operation Sindoor, victory over Operation, the shield will be implemented widely. ठीक है, फिर जियो ये हम क्यों लेकर आए हैं, ये चीजें क्यों मोदी जी ने कहा है, बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ्स बाय यूएस, global supply chain disruptions, China restricting exports of critical raw materials. So India's positioning itself as a self-reliant and resilient economy. ठीक है, so in his 78th Independence Day speech, PM Modi announced that India will roll out its first made in India semiconductor chip by the end of which year? 2024, 2025, 26 or 27? What is the answer? What is the answer to this question? कब तक हम अपनी फर्स्ट इंडिजिनस सेमिकॉन जो चिप है वो by the end of which year we are going to announce it, we are going to release it? Quickly give me the answer. Absolutely correct, 2020. ठीक है. IBC plan eyes partial sale of assets, second shot at rescue. However, the government has proposed amendments to the Insolvency and Bankruptcy Code so that they can make the resolution of distressed companies faster and more flexible. So the changes would allow partial sale of assets. तो अब हम assets को partially भी sell कर सकते हैं अगर जो buyers है they are not found for the entire business. अगर हम buyers नहीं ढूंढ पाए business के लिए, मान लो हमें उस बिजनेस को बेच के जो वाइंड अप करके पैसे लेने हैं और फिर वो क्रेडिटर्स में बांट देने हैं. अगर हमें बायर्स नहीं मिल रहे हैं पूरे के पूरे बिजनेस के लिए, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द बिजनेस के लिए मिल रहे हैं, तो हम पार्शियली सेल कर देंगे अपने एसेट्स. ये अलाउ कर दिया गया है, ये हमने पहले भी देखा था, राइट. प्लस सेकेंड चांस फॉर रेस्क्यू भी दिया जाए, ग्रांटिंग अ फ्रेश 120-day रेजोल्यूशन विंडो
इवन आफ्टर 330 डे पीरियड फॉर रेजोल्यूशन इज एक्सपायर्ड। तो आपका जैसे टाइम फ्रेम दिया जाता है ना कि 330 डेज में आपको रेजोल्यूशन करना ही करना है, तो अगर कोई रेजोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता इवन आफ्टर 330 डेज, तो आप उसे एक्सटेंशन दे दीजिए फॉर 120 डेज। तो ये कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। पहले तो पार्शियल सेल ऑफ एसेट्स को अलाउ कर दिया, एंड 120 डेज का जो रेजोल्यूशन विंडो है वो और ओपन कर दिया इवन आफ्टर द 330 डे पीरियड। ठीक है, अब चेंज क्या है, किस लिए है चेंज? टू अवॉइड सिचुएशंस लाइक भूषण पावर एंड स्टील where the resolution plan lapsed after 330 days and liquidation was ordered by the Supreme Court. This change prevents companies from being forced into liquidation just because the time window expired. ठीक है, पार्शियल एसेट सेल अलाउ किया गया। लेंडर्स कैन सेल इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ अ फर्म। अगर कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है पूरी की पूरी कंपनी खरीदने में, तो कुछ कुछ एसेट्स करके बेच दिए। ठीक है, फिर एक सेकंड रेजोल्यूशन विंडो लेकर आए हैं कि बियॉन्ड 330 डेज की जो अगर डेडलाइन खत्म हो गई तो आप उसे 120 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको 66% क्रेडिटर्स का कॉन्सेंट चाहिए। ठीक है, amendments, these amendments formally insert provisions into section 33 of the IBC। तो ये section 33 IBC में ये amendments add on होती हैं। ठीक है, this strengthens the objective of rescuing viable businesses rather than shutting them down। ठीक है, तो जो experts views है, it recognizes practical difficulties and provides lenders more options, greater comfort for stakeholders in opting for revival instead of liquidation। ठीक है, proposed amendment क्या है? Prevents liquidation orders merely because resolution time has lapsed। Target क्या है? Disposal of distressed companies, avoid value erosion। Fresh resolution window add किया है। ठीक है, so according to the proposed IBC amendments, how much additional time can lenders get to attempt a new resolution plan after 330 day period has expired? 60 days, 90 days, 120 days, 150 days? What is the answer? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी अभी हमने ये पढ़ा है। ठीक है, सो एब्सोल्युटली करेक्ट चेतन, 120 डेज। ठीक है, तो 120 डेज तक आपको एक एक्सटेंशन पीरियड मिल जाता है। ठीक है, ओके, यस शिल्पी, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक और आर्टिकल था, दिवाली जीएसटी बोनांजा ऑन वे, गवर्नमेंट टू स्क्रैप 12%, 28% रेट्स। The government has proposed a major overhaul of GST slabs, planning to remove 12% and 28% rates। ये हमने पहले भी वैसे देखा हुआ है ना? मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विल नाउ बी टैक्स्ड एट 5% और 18%। तो कोई 12% और 28% पे नहीं होगा। सो ये जो मल्टी टीयर जीएसटी सिस्टम है उसको हमने स्क्रैप करना है। दिस इज गोइंग टू बूस्ट कंजम्पशन एंड ग्रोथ। ठीक है, इनिशियली गवर्नमेंट रेवेन्यूज हो सकता है कम होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी सही चीज है। ठीक है, तो प्रपोजल क्या है कि जो 12% स्लैब है वो या तो हम 5% में शिफ्ट कर देंगे या फिर 18% में शिफ्ट कर देंगे, और जो 28% स्लैब है इट विल मूव टू अ न्यू 40% स्लैब which is going to be only for luxury or sin goods like tobacco, SUVs, aerated drinks. Broader shift will be to 5% and 18% categories for most items. ये कौन से सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा? ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स। And luxury goods and जो sin products हैं, they're going to attract higher rates. Or GST Council is going to take up this restructuring in September, October 2025. ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? To simplify compliance, reduce litigation, boost demand, and this is going to be a Diwali gift for the citizens. Challenges क्या है? Short term revenue loss for exchequer, balancing fiscal needs with consumption push. ठीक है, and this is going to be expected to make GST more efficient, business friendly, growth oriented। ठीक है, तो जो ओल्ड सिस्टम था 5%, 12%, 18%, 28%, अब न्यू प्रपोजल क्या है? 5%, 18% एंड 40%। ठीक है, तो जो 12% और 28% को स्क्रैप करने की बात कह रहे हैं, एंड मोस्ट आइटम्स विल बी इन 5% एंड 18% ब्रैकेट्स। ठीक है, so as per the government's GST restructuring proposal, which new slab will replace the 28% rate for luxury and sin goods? 30%, 45%, 40%, or 45%? What is the answer? What is the answer for this question?
एब्सोल्युटली करेक्ट 40%। ठीक है, चलो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे आपसे कवर करने थे। इफ यू गाइस वांट टू कनेक्ट विद मी बियॉन्ड दीज सेशंस, तो मन्नत एजुकेटर मेरा टेलीग्राम हैंडल है। जस्ट टाइप मन्नत एजुकेटर एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डाउनलोड दिस आरबीआई ग्रेड बी फ्री प्रेपरेशन किट। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है ये। कंप्लीट गाइड इसमें आपको मिलेगी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस टर्म्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, बजट हाइलाइट्स मिलेंगे, अलॉट ऑफ एमसीक्यूज आर गोइंग टू गेट। एयर वन के जो नोट्स है वो आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मिलेंगे, क्वांट एंड रीजनिंग फॉर्मूला ई बुक मिलेगी आपको, 20 मॉडल एसेस फॉर आरबीआई ग्रेड बी, 500 जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज, 120 प्लस मैनेजमेंट एमसीक्यूज। तो ये सब आपको अवेलेबल रहेगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डिटेल्स आपको चाहिए है, कुछ शेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है, एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, आपने आंसर्स चेक करवाने हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेली। ठीक है, so that is all from my side. Thank you so much to all of you. If there's anything that you want to ask me, you can ask in the comment section. Otherwise, we are going to end the session over here. ठीक है, all right then. Thank you so much. Have a good day, all of you, and I will see you in my next one. Bye bye.